Good afternoon. Good afternoon, everybody, my dear students. Good afternoon. Join fast in today's live class of cell division meiosis. Join fast. गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो पोर्शन वो है मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस अंडर सेल डिवीजन मियोसिस, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मियोसिस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यू जॉइन फर्स्ट so that we can start the basic concept of meiosis. Join fast, students. So the basic concept of meiosis, all of you know that the meiosis जो cell division है, ये meiosis cell division today we have to complete। and meiosis का definition क्या है? हम लोग जो चीज़ बोले थे जो meiosis में one cell divides twice, दो बार डिवीजन होगा टू फॉर्म फोर सेल्स। वन सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म फोर सेल्स हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम will form. So this is one cell 2n. 2n will be divided to form n and form the n. There will be another time division. So ultimately 4n, that is 4 cells are formed. This stage is called meiosis 1 and this stage is called meiosis 2. So there are two phases of meiosis. One is meiosis 1, another is meiosis 2. So my dear student, in meiosis, but other student join fast. Now it's 3:30. Join fast. First is the concept of meiosis, and we have to understand. Now it's visible meiosis. So we have to understand that what is meiosis. Meiosis means one cell divides twice. वन सेल दो बार डिवीजन होगा टू फॉर्म दी फोर सेल्स हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सपोज दिस इज वन डिप्लॉयड सेल एंड ए डिवीजन हुआ। फर्स्ट डिवीजन में दो टो एन बना एंड सेकेंड डिवीजन में फॉर्म दिस एन अल्टीमेटली टू सेल फॉर्म एंड फॉर्म दिस एन अल्टीमेटली टू सेल फॉर्म। सो दिस फर्स्ट हाफ इज कॉल्ड meiosis 1 and the second half is called meiosis 2. So during meiosis, one cell ultimately divides twice, two times division occur, and how many cell formed? 1, 2, 3, 4 cell formed, and chromosome number was 2n. Now the chromosome number become n. So one cell divides two times to form the four cell having half number of chromosome, and that process is called meiosis. So this is the definition and basic concept of meiosis, that during meiosis one cell will divide two times and ultimately four cell formed and the chromosome number will become half. Last day we have seen in mitosis that the chromosome number will remain same, but in meiosis there will be chromosome number will become half. So this is the main concept of meiosis. अभी हम लोग पढ़ेंगे where the meiosis occur, meiosis कहाँ पे होते हैं and कैसे होते हैं, that we will study. So before that, student join fast. All the students should join fast, and we are going to start the meiosis का basic definition. आपको समझ में आ गया meiosis में क्या हो रहा है? वन सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म फोर सेल हैविंग क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? 2n था, n हो गया, क्रोमोसोम नंबर विल बिकम हाफ. सो दिस इज कॉल्ड
मियोसिस। अभी क्वेश्चन है मियोसिस कहाँ पे होगा, वेयर द मियोसिस ऑकर एक्चुअली। सो प्लेस ऑफ मियोसिस, place of meiosis, where the meiosis occur in plant cell and in animal cell as well। मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, concept will become more clear। in plant cell meiosis होते हैं एंथर में एंड ओव्यूल में। कहाँ पे होते हैं, प्लांट सेल में दो जगह में मियोसिस होता है, वन इज इन ओव्यूल, अनदर इज इन एंथर। एंथर से क्या बनते हैं, ऑल ऑफ यू नो, एंथर से बनते हैं माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। एंथर विल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, एंड दिस ओव्यूल विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट। It will produce female gametophyte. This will produce female gametophyte. So, कहाँ पे हो रहा है मियोसिस? मियोसिस प्लांट्स में होते हैं एंथर में एंड ओव्यूल में। इन एंथर it will produce the pollen grain or microspore, and in ovule it will produce female gametophyte. So, in plants, ovule, this meiosis takes place in ovule and in anther. Anther कहाँ पे होते हैं, all of you know, प्लांट के अंदर जो स्टैमेन है, ये स्टैमेन में इसको बोलते हैं स्टैमेन और एंड्रोइशियम, इसमें दो पार्ट होता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एंथर, all of you know. So this is the male, this is the male reproductive part of a ideal flower, and इस फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो पार्ट होता है, वन इज एंथर, अनदर इज फिलामेंट, एंड एंथर एंड फिलामेंट कॉम्बाइनली कॉल्ड द स्टैमेन, और एज यू नो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंड्रोइशियम। सो द एंड्रोइशियम का जो यूनिट है, दैट एंड्रोशियम के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैमेन बोलते हैं। एंड विद इन ए स्टैमेन देयर आर टू थिंग्स, वन इज एंथर एंड अनदर वन इज फिलामेंट। एंड विद इन द एंथर क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन बनेगा बाय द प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सिमिलरली इन द ओव्यूल फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। ये तो था प्लांट्स में क्या होगा। एनिमल में कहाँ पे होते हैं मियोसिस, एनिमल में होते हैं सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस एंड ओवरी में। मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी में होते हैं। ऑल ऑफ यू नो टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं, मियोसिस में स्पर्म बनते हैं, एंड ओवरी के अंदर मियोसिस में क्या बनते हैं, एग बनते हैं और ओवम बनते हैं। सो दिस इज दी बोथ द कंसेप्ट। फर्स्ट मैंने बताया जी मियोसिस का डेफिनेशन क्या है, एंड सेकेंड मैंने बताया मियोसिस कहाँ पे होते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मियोसिस? मियोसिस मीन्स वन सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म द फोर्थ सेल हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, having half number of chromosome। and mitosis में all of you know one cell divides once to form the two cell having similar number of chromosome, and that makes the difference between mitosis and meiosis। meiosis कहाँ पे होता है प्लांट्स में, एंथर के अंदर एंड ओव्यूल में। ओव्यूल से बनते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, एंथर से बनते हैं पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर, एंड एनिमल में टेस्टिस एंड ओवरी में होगा। टेस्टिस में इट विल प्रोड्यूस स्पर्म, ओवरी में इट विल प्रोड्यूस ओवम। सो राइट इट डाउन द प्लेस वेयर द मियोसिस ऑकर। सो राइट इट डाउन द प्लेस वेयर द मियोसिस ऑकर बेसिकली। Write down the place where the meiosis occur, and then I will go to the meiosis का जो हमारा है मैकेनिज़्म, वो meiosis का मैकेनिज़्म हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैकेनिज़्म रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट दैट वी हैव टू स्टडी फर्स्ट।
स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लो, आप लोग अच्छे से लंच कर लिए तो और अच्छा से क्लास भी कर लो। एंड मियोसिस का स्पेशल पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट तो ये समझना पड़ेगा जी मियोसिस का जो मैकेनिज्म है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, स्टिल देन मियोसिस रिलेटेड कुछ थिंग्स बताना जरूरी है। मियोसिस में दो फेज होते हैं, ऑल ऑफ यू नो देयर आर टू फेज ऑफ मियोसिस, वन इज मियोसिस वन and another is meiosis 2. So meiosis 2 जो है, these are identical to the mitosis, so this is almost same as mitosis, almost same as mitosis, but meiosis 2, meiosis 1 के अंदर all of you know इसके अंदर पास्टो फेज होते हैं एंड दीज आर लेप्लोटिन फेज, जाइगोटिन फेज, पैकेटिन फेज, डिप्लोटिन फेज एंड डायाकाइनेसिस। Try to understand. First write down the 5 phase of meiosis 1. meiosis 1 का 5 फेज फर्स्ट राइट डाउन। meiosis 1 का फर्स्ट फेज, तो meiosis में डेफिनेशन हम लोग पढ़े, meiosis where the meiosis occur in plant and animal, ये चीज़ भी क्लियर हो गया। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी meiosis का मैकेनिज्म रिलेटेड क्या क्या चीज़ पढ़ना है। एंड मियोसिस मैकेनिज्म इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस, बट टिल देन मियोसिस से हमारा क्या क्या आ सकता है ये हमको जानना पड़ेगा एंड पढ़ना पड़ेगा। एंड अंडर दिस मियोसिस में 2 फेज होते हैं, वन ऑल ऑफ यू नो द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। एंड मियोसिस 1 में meiosis 2 is almost equal to the mitosis as it is a equational division. So meiosis 1 के अंदर 5 फेज होते हैं, लेप्लोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनोसिस। सो द प्रोफेज अगर देखो माइटोसिस का एंड प्रोफेज देखो मियोसिस का, तो मियोसिस प्रोफेज जो है वो बड़ा है देन दी माइटोसिस। माइटोसिस का प्रोसेस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज as you know. So mitosis prophase is smaller, meiosis prophase is larger. माइटोसिस का प्रोफेज में एक ही फेज था, मियोसिस का प्रोफेज में 5 फेज है, दैट इज लेप्लोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनोसिस। तो 5 फेज मिल के एक प्रोफेज होते हैं, दैट्स वाई मियोसिस प्रोफेज is larger, is longer than the mitosis prophase. And the second things जो बोलने वाले हैं, मियोसिस में जो जाइगोटिन होते हैं, इस जाइगोटिन स्टेज में जाके एक इंटरेस्टिंग इवेंट होते हैं। व्हाट हैपन ना, इन जाइगोटिन दोटो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, होमोलोगस क्रोमोसोम सपोज इन दिस पेंसिल बॉक्स, ये जो क्रोमोसोम है, दिस क्रोमोसोम एंड दिस चेन देखने में सिमिलर है कि नहीं? दिस चेन एंड दिस चेन देखने में सिमिलर है। जब दोनों क्रोमोसोम आइडेंटिकल है, सिमिलर है, देन दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम, दे शोज दी होमोलॉजी। सो दिस 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच अट्रैक्शन होते हैं, अट्रैक्शन हो के देखो दिस 2 क्रोमोसोम फॉर्म साइड बाय साइड आते हैं और एक जीपर लाइक पेयरिंग बनते हैं। सो दिस इज ए पेयरिंग। हाउ द पेयरिंग ऑकर? इट्स ए जीपर चेन, ZIPPER, जीपर लाइक पेयरिंग, एंड दैट्स व्हाई द फेज इज कॉल्ड zygotin. And this pairing of the homologous chromosome during zygotin is called synapses.
is called synapses. Most important event of meiosis is synapses. So what is synapses? During during zygote, write down synapses. Student join. So write down synapses during zygote. During zygote. Write down what is synapses. During zygote, homologous chromosome came to close with one another. Homologous chromosome came to close with one another. During zygote, the homologous chromosome came to close with one another. Homologous chromosome came to close with one another to form a zipper-like pairing. To form a zipper, it is very difficult to separate. So this is a zipper-like pairing. So during zygote, homologous chromosome came to close with one another and form a zipper-like pairing called write down, called synapses. SYNAPSYS, synapses. Next point, write down synapses जो एरिया में हो रहा है. सपोज सोचो दिस इज ए चेन एंड ये जो एरिया है यहाँ पे साइनेप्सिस हुआ है. सो यहाँ पे एक तो एरिया है, यहाँ पे एक तो एरिया है. इफ यू सी द साइनेप्सिस इन दिस केस, देखो ये जो चेन है ना, चेन की इस साइड में ब्लैक कलर है और इस साइड में भी ब्लैक कलर का कपड़ा है, बीच में चेन ब्लू कलर का है. सो इसमें 3 लेयर है. दिस इज 1 लेयर, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लैक कलर क्लॉथ, एंड दिस आर द 2 लेयर called the lateral layer. I am talking about the synapses structure, and this is the pairing of homologous chromosome. So during zygote, 2 homologous chromosomes came to close with one another, form a zipper-like pairing called the synapses, and during this time 3 layers formed, 2 lateral layer and 1 central layer. This is the 2 lateral layer and 1 central layer. And this lateral layer and central layer, where this thing occur, this area is called synaptonymal complex. The third point is synaptonymal complex. What is synaptonymal complex? Now, during synapses or during zygote of the meiosis 1, 2 homologous chromosomes came to close with one another and they form a zipper-like pairing. That zipper-like pairing is called synapses. Synapses जहाँ पे होते हैं उस एरिया को बोलते हैं synaptonymal complex. So my dear student, what is synaptonymal complex? Synaptonymal complex means, so my dear student, what is synaptonymal complex? Synaptonymal complex means it is the area, synaptonymal complex is the area where 2 homologous chromosomes came to close with one another and form a zipper-like pairing. मैंने दिखाए थे AB homologous chromosome both came to close with one another to form a zipper-like pairing, and that zipper-like pairing is called synapses. और ये synapses जब हो रहा है तो इसमें कितना लेयर है? ये जो चेन था, इस चेन का 2 साइड में 2 ब्लैक कलर का लेयर है, ऊपर में उठा हुआ है क्रोमोसोम. सो these are the 2 lateral layer and 1 is central layer, and the area where the synapses occur, this area is called synaptonymal complex. So what is synaptonymal complex? Write down during zygote, where the synapses occur, write down during zygote, the synapses occur, write down during zygote,
synapses occur in a particular area during synapse zygote in synapses occur in a particular area called synaptonymal complex, called synaptonymal complex. तो हम लोग क्या पढ़े, व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस मीन्स वन सेल दो बार डिवीजन होके चार सेल बनाएगा, क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम। मियोसिस कहाँ पे होते हैं? प्लांट्स में मियोसिस होते हैं, कहाँ पे ना, एंथर में, जिससे पोलन ग्रेन बनते हैं। एंड मियोसिस ऑकर इन ओव्यूल फॉर्म एट द फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म। एनिमल में टेस्टिस में एंड ओवरी में मियोसिस टेक्स प्लेस, टेस्टिस के थ्रू स्पर्म एंड ओवरी के थ्रू ओवम्स आर प्रोड्यूस्ड। सो उसके बाद मियोसिस का जो मैकेनिज्म है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मियोसिस में टू फेज है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। एंड मियोसिस 1 में जो प्रोफेज होते हैं उसके अंदर 5 स्टेप होते हैं, आप लोग लोअर क्लास में पढ़े। 1 इज लेप्लोटिन, 1 इज जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनोसिस। अरे एलजेडपी डीडीआई, अरे एलजेडपी डीडीआई, अरे एलजेडपी डीडीआई, एलजेडपी डीडीआई मतलब लेप्लोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनोसिस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। अरे एलजेडपी डीडीआई, अरे एलजेडपी डीडीआई। सो एलजेडपी डीडीआई मीन्स लेप्लोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनोसिस। क्या हो रहा है जाइगोटिन स्टेज में? टू होमोलोगस क्रोमोसोम केम टू क्लोज विथ वन अनदर टू फॉर्म ए जिपर लाइक पेयरिंग। एट दैट जिपर लाइक पेयरिंग को यू कैन से साइनेप्सिस। साइनेप्सिस जो एरिया में हो रहा है, that area is called synaptonymal complex. That area is called synaptonymal complex. And that synaptonymal complex में दो वन सेंट्रल लेयर है and दो lateral layer है. So one central layer and 2 lateral layer makes the complex called synaptonymal complex. तो ये हम लोग दो स्पेशल चीज़ 3 पढ़े। हम लोग पढ़े प्रोफेज में लेप्लोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनोसिस स्टेज है, साइनेप्सिस एंड साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स वी हैव डिस्कस्ड। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ द मियोसिस दैट ऑकर ड्यूरिंग मियोसिस, जिससे ऊपर क्वेश्चन आता ही है, एंड दैट इज नन अदर देन क्रॉसिंग ओवर। That is none other than crossing over. देखो मियोसिस के पहले क्या होते हैं स्ट्रक्चर, आई एम शोइंग यू। मियोसिस के पहले जो स्ट्रक्चर होगा, सो दिस इज वन क्रोमोसोम, रेड कलर से आई एम शोइंग यू। अनदर क्रोमोसोम आई एम शोइंग यू बाय द ब्लैक वन, ब्लैक कलर। सो दिस आर कॉल्ड टेट्राड। क्रोमोसोम को टेट्राड बोला गया है। क्यों टेट्राड बोले? क्योंकि एक सेंट्रोमियर के अंदर हाउ मेनी क्रोमाटिड प्रेजेंट? 4 क्रोमाटिड प्रेजेंट, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टेट्राड। ऑल ऑफ यू नो एक क्रोमोसोम को डायट कब बोलेंगे? जब देयर विल बी 2 क्रोमाटिड। एंड व्हेन विल कॉल्ड इट टेट्राड? व्हेन देयर विल बी 4 क्रोमाटिड। सो on the basis of the number of chromatid we can say it dyad or tetrad. My dear student, अभी ये जो लेप्लोटिन, जाइगोटिन के बाद पैकेटिन स्टेज में जाके ये देखो, ये जो सेंट्रोमियर है ना, इसके 4 साइड से 4 रेड कलर क्रोमाटिड है। और यू कैन सी ये जो ब्लैक कलर सेंट्रोमियर है ना, अंदर में कौन होता है क्रोमोसोम का? सेंट्रोमियर। ऑलरेडी मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूँ। सो क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर, these are the 4 chromatid. So these black color chromatids are present within this centromere, and these red color chromatids are present within this centromere. So is red sister chromatid? ये 4 कौन है? सिस्टर क्रोमाटिड। सिस्टर लोग घर में रहते हैं कि घर में रहते हैं। सो दिस आर सिस्टर क्रोमाटिड एंड दिस 2 4 आर sister chromatid. So but this black and red is
नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, तुम्हारे घर में अगर 2 सिस्टर है तो यू आर सिस्टर, बट दूसरे घर के कोई लड़की के साथ यू आर हैविंग ए रिलेशन ऑफ नॉन सिस्टर. सो सिस्टर क्रोमाटिड मीन्स chromatid present. Sister chromatid means, so sister chromatid means chromatid present in the same centromere, and non-sister chromatid means chromatid present in different centromere. So here the red color and black color are non-sister chromatid, and क्या होगा इसमें, ये जो पैकेटिन स्टेज में रेड कलर का कुछ पोर्शन टूट जाएगा, ब्लैक का कुछ पोर्शन टूट जाएगा, एंड रेड का कुछ पोर्शन आके इसमें जोड़ जाएगा. एंड सिमिलरली व्हाट विल हैपन, सिमिलरली ये जो रेड है ना, इस रेड के आगे भी कुछ ब्लैक जुड़ जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो ब्लैक था, ब्लैक के आगे क्या था, ब्लैक, लेकिन ब्लैक टूट के रेड के साथ जुड़ गया, और रेड के आगे क्या था, रेड, बट रेड टूट के ब्लैक के साथ जुड़ गया. एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ बिटवीन दी सिस्टर की नॉन सिस्टर, बिटवीन दी टू नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ दी होमोलोगस क्रोमोसोम, एंड दैट एरिया को, दैट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. So what is crossing over? Crossing over means the exchange of genetic material between the two non-sister chromatid of the homologous chromosome, and that is called crossing over. So इस क्रॉसिंग ओवर से ये जो रेड कलर जब नेक्स्ट जनरेशन जाएंगे ब्लैक को लेके जाएंगे, ब्लैक कलर जब नेक्स्ट जनरेशन आएंगे रेड को लेके आएंगे, एक न्यू कॉम्बिनेशन होगा, रेड में ब्लैक आएगा, ब्लैक में रेड आएगा. सो दिस न्यू कॉम्बिनेशन को हम लोग अगर जनरेशन बाय जनरेशन कैरी करते हैं, इट विल कॉजेस वेरिएशन. एंड माय डियर स्टूडेंट, all of you know successive variation leads to the process of evolution. Evolution is nothing but the successive variation. तो ये जो दोनों क्रोमोसोम था, ये दोनों क्रोमोसोम कौन था, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम. एंड क्या हुआ यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ बिटवीन दी, ये रेड रेड है, अगर ये जो मेरा पेन है ये रेड रेड, अभी रेड का कैप चला गया है ब्लैक में, ब्लैक का कैप आ गया है रेड में. सो ये जो न्यू कॉम्बिनेशन रेड में ब्लैक और ब्लैक में रेड, ये जो न्यू कॉम्बिनेशन है, इफ दिस न्यू कॉम्बिनेशन गोज टू द नेक्स्ट जनरेशन, इट विल कॉजेस वेरिएशन वेरिएशन वेरिएशन. एंड सक्सेसिव वेरिएशन से क्या होते हैं, एवरीबॉडी नोज सक्सेसिव वेरिएशन कॉजेस एवोल्यूशन. सो this is the crossing over, which is one of the most crucial event that is takes place in the meiosis mechanism. So write down, during packeting, write down, during packeting, write down, during packeting of meiosis 1, write down, during packeting of meiosis 1, exchange of genetic material. During packeting of meiosis 1, exchange of genetic material occur. During meiosis 1, exchange of genetic material occur between the, exchange of genetic material occur between the non-sister chromatids, between the non-sister chromatids of homologous chromosome, between the non-sister chromatids of homologous chromosome, and that is called crossing over. So exchange of genetic material occur between the non-sister chromatids of homologous chromosome, that is called crossing over. So write down. तो हम लोग क्या पढ़े स्पेशल पॉइंट में, हम लोग पढ़े 2 फेज है मियोसिस में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 में क्या होता है, लेप्लोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस. एंड क्या होता है जाइगोटिन में, जाइगोटिन में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम केम टू क्लोज विथ वन अनदर टू फॉर्म ए जीपर लाइक पेयरिंग कॉल्ड साइनैप्सिस. एंड जो एरिया में साइनैप्सिस हो रहा है दैट इज कॉल्ड साइनैप्टोनिमल
complex. And third one is क्रॉसिंग ओवर, दैट इज पैकेटिन में हम लोग देखे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, एंड दैट स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये जो क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर कौन स्टेज में हुआ? क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन द पैकेटिन स्टेज ऑफ मियोसिस 1। पैकेटिन स्टेज ऑफ मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर हुआ। माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस पार्ट। तो मियोसिस का मैकेनिज्म नहीं है सिलेबस में, बट मियोसिस का हमारा जो मियोसिस क्लास 10th का सिलेबस में नहीं है, बट इस फंडामेंटल क्लास में मियोसिस का बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने बता दिया, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis, next topic, that is significance of meiosis. What are the significance of meiosis? All of you know meiosis में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम नंबर become half in the gamete, gamete में क्रोमोसोम नंबर half हो रहा है। So chromosome number become half bracket में in gametes. So chromosome number become half in gametes. Number 2, यहाँ पे हम लोग मियोसिस में देखे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इस फर्टिलाइजेशन में क्रोमोसोम नंबर, नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इज रेस्टोर्ड, क्योंकि दो तो गैमेट अगर n और n होगा, हैप्लॉइड होगा, फिर 2n मिलके 2n हो जाएगा। अगर दिस मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट n है तो दोनों मिलके फर्टिलाइजेशन में फिर 2n हो जाएगा। सो द क्रोमोसोम नंबर को रेस्टोर्ड रखने के लिए एक बहुत आवश्यक कदम है। सो राइट डाउन, सो इन फर्टिलाइजेशन नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर is restored. In fertilization, normal chromosome number is restored. So normal chromosome number is restored, RS, TRD. So नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर रेस्टोर्ड हो रहा है। दिस इज द सेकेंड इम्पोर्टेंस ऑफ द मियोसिस। थर्ड, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम आकार, एंड दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से क्या होते हैं? वेरिएशन। सो राइट डाउन नंबर 3, एक्सचेंज ऑफ genetic material occur during packeting. Exchange of genetic material occur during packeting, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं called crossing over। सो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इसमें होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। व्हाट इज द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट? ये जो क्रॉसिंग ओवर होगा इससे क्या होगा? वेरिएशन क्रिएट होगा। सो नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑकर। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज वेरिएशन ऑकर। अगर वेरिएशन हो रहा है तो क्या होगा? एवोल्यूशन होगा। ऑल ऑफ यू नो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज variation causes evolution. Variation causes evolution. So these are the significance of meiotic cell division or meiosis. Please write it down, the significance of meiosis. First significance is chromosome number become half
क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है। सेकंड, ये जो हाफ क्रोमोसोम नंबर, ये क्रोमोसोम नंबर को रेस्टोर कर रहा है नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर को आफ्टर फर्टिलाइजेशन। थर्ड, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑकर बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जिससे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑकर ड्यूरिंग पैकेटिंग, जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर व्हाट विल हैपन? वेरिएशन। वेरिएशन से क्या होता है? एवोल्यूशन। So these are the significance of meiosis. Now coming to the next part, and next part all of you know, that is the difference between mitosis and meiosis. First write it down. Mitosis and meiosis. And now how we can distinguish the mitosis and meiosis? All of you know, एक सिंपल फंडा में दिए थे, माइटोसिस में 2n से क्या होता है? 2n होता है। meiosis में 2n से क्या होता है? n होता है, and that n will produce n। इसका मतलब है one cell will produce 4 cell in meiosis, but 1 cell will produce 2 cell in mitosis. So mitosis में क्या हो रहा है? देखो, one cell divides once. One cell divides how many times? Only once, to form the 2 cell, and this chromosome number will remain same. But here one cell divides twice to form the 4 cell, and the chromosome number become half. So now what is the difference between, on the basis of that mitosis meiosis का क्या difference होगा? माइटोसिस में फर्स्ट लिखेंगे क्या ना, वन सेल डिवाइड्स वंस, तो क्या होगा? सेल डिवीजन होकर डैश देखे वंस, हियर इट इज ट्वाइस। नंबर 2, सेल डिवीजन होकर वंस एंड नीदर ट्वाइस। अभी माइटोसिस में कितना सेल बनते हैं? 2 सेल फॉर्म्ड। All of you meiosis में 4 cells formed. All of you know mitosis में क्या होगा ना, क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा। सो क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, लेकिन meiosis में what will happen? All of you know, the chromosome number become half. The chromosome number in meiosis A become half, mitosis से A half हो जाएगा। ना meiosis and mitosis कहाँ पे होगा? All of you know mitosis occur in somatic cell. Number 4 point, mitosis occur in somatic cell, and meiosis जो है that is occur in zygotic cell। meiosis occur जो है ये zygotic cell, और meiosis किस में हो सकता है? हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल, दैट इज रिप्रोडक्टिव सेल, और ऑल ऑफ यू नो दिस इज कॉल्ड सेक्स सेल, सेक्स ऑर्गन जहाँ पे ए होता है। सो दिस इज द माइटोसिस एंड meiosis। बट माइटोसिस meiosis में और क्या होता है हम लोग जानते हैं? माइटोसिस कंटिन्यूअसली ऑकर थ्रू आउट द लाइफ। माइटोसिस कहाँ पे होते हैं ना? माइटोसिस number 5th point, mitosis continuously occur throughout the life. Mitosis continuously occur throughout the life, but meiosis, all of you know,
ओनली ऑकर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, सारा जिंदगी में नहीं, जब ऑकर ड्यूरिंग, जब ज़रूरत होगा, ऑकर ड्यूरिंग ऑल ऑफ यू नो रिप्रोडक्शन के टाइम ही मियोसिस होते हैं। सो ऑकर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ना माइटोसिस कहाँ पे होते हैं? ना माइटोसिस ऑकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ, मियोसिस ऑकर ओनली ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। माइटोसिस के अंदर हम लोग देखें ये जो जेनेटिक वेरिएशन ये नहीं। सो माइटोसिस में जेनेटिक वेरिएशन नॉट ऑकर, बट इन मियोसिस व्हाट वी हैव सीन दैट जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में हो रहा है। नेक्स्ट इज माइटोसिस क्यों होता है? फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट। माइटोसिस का क्यों होते हैं? नंबर 7 ऑकर फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट, टिश्यू रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट एंड ग्रोथ के लिए माइटोसिस होते हैं। लेकिन मियोसिस के लिए होते हैं, मियोसिस होते हैं फॉर गैमेट फॉर्मेशन। ऑकर फॉर गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होते हैं। सो दिस आर द नंबर 7 पॉइंट। नंबर 8 पॉइंट बिटवीन द माइटोसिस मियोसिस, जो बोले थे माइटोसिस में प्रोफेज जो है, दैट प्रोफेज स्टेज इज शॉर्टर, बट मियोसिस में प्रोफेज इज लॉन्गर ड्यूरेशन। It is having the longer duration because leplotin, zygotin, pakitin, diplotin and diakinesis है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये तो था माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस। तो आज हम लोग क्या पढ़े? व्हाट इज मियोसिस? One cell divides once to form the two cell having half number of chromosome। मैं बोले थे माइटोसिस में वन सेल डिवाइड्स वंस होते हैं, वंस के जगह ट्वाइस कर दो। माइटोसिस में 2 सेल बनता है, 2 के जगह 4 कर दो। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर बिकम सेम, इधर सेम काट के हाफ कर दो, मियोसिस हो गया। और मियोसिस प्लांट में किधर होते हैं? एंथर में होते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर, ओव्यूल में होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट में। मियोसिस एनिमल में कहाँ होगा? टेस्टिस में एंड ओवरी में। स्पर्म बनाने के लिए एंड ओवम बनाने के लिए मियोसिस आर रिक्वायर्ड। अभी मियोसिस 2 फेज में हो सकता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में लेप्लोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायकिनेसिस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद हम लोग बोले व्हाट इज द साइनेप्सिस? साइनेप्सिस मीन्स दी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है एंड दैट होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म ए जीपर लाइक पेयरिंग ड्यूरिंग zygotin, and that's why this is called zygotin or jeeper like pairing, none other than synapses। synapses जो एरिया में हो रहा है that is called synaptonymal complex। and crossing over क्या हो रहा है? exchange of genetic material between the two non-sister chromatid of the homologous chromosome, that exchange is called crossing over। crossing over से क्या होगा? next generation में variation होगा, variation से evolution will occur। What are the significance of meiosis? meiosis में chromosome number become half। fertilization के time AN2 chromosome में ध्यान में आएंगे एंड हमारा जीनोटाइप को मेंटेन करेंगे। अभी ये जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है गैमेट में, नंबर 2 फर्टिलाइजेशन के टाइम हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर को रेस्टोर करेंगे। सेक्स और दी गैमेटिक सेल जहाँ पे मियोसिस होते हैं, इस मियोसिस से क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इज दैट वेरिएशन कॉज द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो इससे एवोल्यूशन हो जाएगा। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस मियोसिस? माइटोसिस डिविजन एक बार होते हैं, मियोसिस डिविजन देखा जाता है 2 बार होते हैं। माइटोसिस में 2 cells आर फॉर्म बट इन मियोसिस 4 cells फॉर्म। माइटोसिस द क्रोमोसोम नंबर रिमेन हाफ बट इन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन
Mitosis में chromosome number will remain same, but in meiosis chromosome number will become half. Mitosis occur in somatic cell, meiosis occur in sex cell, reproductive cell, और माइटोसिस थ्रूआउट द लाइफ होगा, लेकिन मियोसिस खाली रिप्रोडक्शन के टाइम होगा. माइटोसिस में वेरिएशन नहीं होगा, मियोसिस में वेरिएशन होगा. माइटोसिस में ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट एक ही बात है. मियोसिस में ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट के लिए मियोसिस नहीं होता है, ग्रोथ के लिए एंड गैमेट फॉर्मेशन के लिए होते हैं. सो माइटोसिस जो है ये माइटोसिस का जो प्रोफेज है ये शॉर्टर ड्यूरेशन है, लेकिन मियोसिस के अंदर लेप्लोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायगोनोसिस है. सो इट इज़ ए लॉन्गर प्रोफेज इज लॉन्गर स्टेप्स, ज़्यादा टाइम से प्रोफेज होता है. तो विद दिस आज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किए, दैट इज़ माइटोसिस मियोसिस तक. इसके बाद जाके हमको क्या करना पड़ेंगे, क्वेश्चन करना पड़ेगा. एंड आई विल सेंड यू द क्वेश्चन सो दैट वी कैन सॉल्व द डिफरेंट क्वेश्चन. बट ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बहुत बड़ा चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए. इसमें हम लोग पढ़े फर्स्ट व्हाट इज़ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, डिस्कवरी ऑफ द क्रोमोसोम मैंने पढ़ा दिए. होम मिनिस्टर कहते हॉप मिस्टर ट्राडिस कंथे स्पीसीज में डिस्कवर किए थे. उसके बाद हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर बताया. डीएनए का स्ट्रक्चर बताने के बाद डीएनए का न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नीड फॉर ए न्यू सेल, उसके बाद इंटरफेस का सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ दी न्यू डीएनए हम लोग पढ़े, सेल डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ऑफ माइटोसिस पढ़े, उसके बाद टाइप्स ऑफ माइटोसिस पढ़े. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी मियोसिस, एंड विद दिस मियोसिस इज ऑल्सो ओवर. एंड मियोसिस में माइटोसिस के साथ मियोसिस का क्या डिफरेंस है वो भी बता दिए. सो दैट इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी अनदर चैप्टर. बट बिफोर दैट इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ो, एंड वट एवर द डाउट विल कम यू कैन आस्क ओवर द फोन ऑल्सो, एंड यू कैन आस्क ओवर द व्हाट्सएप ऑल्सो, सो दैट इस चैप्टर का सारे के सारे डाउट को क्लियर करना है. इस चैप्टर से हमको एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क क्वेश्चन आएगा. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज जो हमारा माइटोसिस में था उसमें 5 मार्क्स क्वेश्चन जरूर आएगा. इससे 5 मार्क्स क्वेश्चन आने का जरूर चांसेस है. मेटाफेज प्लेट का फिगर बनाना जरूर सीखना पड़ेगा. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर कैसे बनता है वो भी पढ़ना पड़ेगा. तो इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास द फिजियोलॉजी रिलेटेड चैप्टर, एंड दैट इज एब्जॉर्प्शन बाय रूट. ये पोर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे. बट अप टू दिस पोर्शन यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग रिलेटेड टू द सेल डिवीजन, रिलेटेड टू द माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस मियोसिस रिलेटेड छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, और इसमें माइटोसिस मियोसिस का जितना फिगर है वो फिगर भी हम लोग ड्रॉ करना जानेंगे. बिकॉज विदाउट ड्राइंग द फिगर ये सब डिस्क्रिप्शन आप अगर एग्ज़ाम में लिखोगे इट हैज़ नो वैल्यू, बिकॉज फिगर इज़ कंपल्सरी, फिगर आपको चाहिए ही चाहिए. सो विद दिस ये माइटोसिस मियोसिस का पूरा पोर्शन को आप लोग रिवीजन करके रखो. दैट 1 सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म द 4 सेल हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. और प्लांट्स में एंथर में या नोव्यूल में होता है, एंथर से पोलन ग्रेन, नोव्यूल से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है. एनिमल में टेस्टिस ओवरी में होते हैं, टेस्टिस से स्पर्म एंड ओवरी में ओवाम बनते हैं. और इसके अंदर 2 मियोसिस 1 मियोसिस 2 होते हैं. मियोसिस 1 में लेप्लोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायगोनोसिस होते हैं. जाइगोटिन में साइनाप्सिस होते हैं. पैकेटिन में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द 2 नॉन-सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट इज क्रॉसिंग ओवर होते हैं. क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन होते हैं, वेरिएशन से एवोल्यूशन होते हैं. सिग्निफिकेंट क्या है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं. जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम क्रोमोसोम नंबर रेस्टोर होते हैं. जेनेटिक मटेरियल क्रॉसिंग ओवर
एंड वेरिएशन, सक्सेसिव वेरिएशन से एवोल्यूशन होता है। माइटोसिस एक बार होते हैं, मियोसिस में 2 बार डिवीजन होते हैं। माइटोसिस में 2 सेल फॉर्म, मियोसिस में 4 सेल फॉर्म। माइटोसिस में सोमाटिक सेल में होते हैं, मियोसिस में गैमेटिक सेल में होते हैं। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। माइटोसिस occur continuously throughout the life, मियोसिस occur only during the reproductive phase। माइटोसिस में जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, मियोसिस में जेनेटिक वेरिएशन है। माइटोसिस ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट के लिए होते हैं, जेनेटिक, एंड मियोसिस स्पेशली गैमेट फॉर्मेशन के लिए होते हैं। माइटोसिस का प्रोफेज शॉर्टर है, मियोसिस का प्रोफेज लॉन्गर है। एंड विद दिस इतना आपको कंप्लीट करके सारे क्लास पॉल्स बायोलॉजी का पानी के पानी हो जाना चाहिए। सारे चीज़ को अच्छा से समझना चाहिए, बार बार समझना चाहिए। मेरा टीचर बोले थे आप क्या पढ़ रहे हो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना बार पढ़ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। इसके लिए रिवीजन इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। आप रिवीजन पूरा करते जाओ, एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाओ। बोर्ड में 100 में 99 लाना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, 99 100 आते हैं। पॉल्स बायोलॉजी का बोर्ड में एवरी ईयर देखा जाता है जो मिनिमम 23-24 स्टूडेंट गॉट अबव 95 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो इसके लिए इस ट्रेडिशन को हमको रखना है और अच्छा से पढ़ना है। विद दिस we are concluding the class today. So next class we are going to start the absorption by root, and with this good day everybody. Thank you, thanks a lot.